इनका कुछ बिल ड्यू है फ्रॉम ईयर 2020, 3-4 महीनों का ड्यू है सर। मैंने रिजॉइंडर पेश किया सर, उसको एक बार बस देख लेते हैं। रिजॉइंडर का पेज नंबर 5 में सर P12 इन दिस CMHO हिमसेल्फ सेइंग कि इनका 26,31,128 रुपए आवंटन प्रदाय करने का कष्ट करें। तो इन दिस रिप्लाई दे आर डिनाइंग द सेम एंड आफ्टर देयर रिप्लाई what will look into it? ही इज कंटेस्टिंग पार्टी। और सर सूचना के अधिकार के तहत भी हमने जानकारी जो इकट्ठा करी सर 12/7/2024 को ये इसमें जन सूचना अधिकारी बता रहे हैं संबंधित शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्म को चिरायु दल के कार्य हेतु वाहन का वर्ष 2020-21 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक माह दिसंबर 2020 माह जनवरी 2021 मार्च 2021 का बिल भुगतान नहीं किया गया है। दे आर एडमिटिंग इट लॉर्डशिप, सो द अमाउंट इज एडमिटेड अमाउंट, they all have to do is to repay it to me, your lordship. What is the period? आप किसके लिए? I am for the mission, my lord. We have filed our reply, my lord, and we have rejected because the vehicle has been engaged by the Chief Medical and Health Officer Korea, and there is a communication between the Director Health Services and the CMHO Korea, my lord. The impugned order is by the NHM itself, your lordship. They have rejected the claim saying the matter is not concerned to our office. That is the because they have preferred earlier. NHM is denying their responsibility, CMHO is still denying their responsibility, lordship. No, and my bill pending since 2020. My vehicle are still running there. CMHO office is still paying me bill. But those 3-4 months of your lordship, I have not been paid yet. नहीं तो मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ना जी। आपका बिल कहाँ पेंडिंग है? सर ये रिलीज होते CMHO ऑफिस से। द व्हीकल इज रनिंग अंडर द स्कीम ऑफ NHM, राष्ट्रीय बालक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ये गाड़ी चल रही है। हमारी गाड़ियां जो चली है उसका जो बकाया बिल है वो आज तक पेमेंट नहीं किया, इसी बात की पिटीशन है। अर्लियर आल्सो आई हैव फाइल्ड अ रिट पिटीशन व्हिच वाज डिस्पोज्ड विद द डायरेक्शन टू कंक्लूड इट विदिन 60 days, your lordship, but they have rejected it on 19/5/2022। How this court bill? ये तो सिविल डिस्प्यूट हो गया ना आपका। बिल पेंडिंग है सर, वही इनको देना है, एडमिटेड अमाउंट है। कौन बोल रहा है? तो एडमिट नहीं कर रहे हैं राष्ट्रीय मिशन जो वाले। मैंने जो P11 if the my lord may see page number 64. There is a clear communication, my lord, between the Director Health Services, he directing to the Chief Medical and Health Officer Korea, my lord. सर और इन सब के बाद इन दोनों पार्टीज के रिप्लाई आने के बाद में जो मैंने रिजॉइंडर फाइल किया वो एक बार देख लेते। उसमें एनेक्शन P12 और P13 दोनों इसमें दे आर एडमिटिंग योर लॉर्डशिप CMHO हिमसेल्फ सेइंग कि इतना रुपए पेंडिंग है, आवंटन प्रदाय करने का कष्ट करें। अदर्स CMOIC तो ही इज एडमिटिंग कि आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है और 4 साल से सारी पेंडिंग ही है द बिल। चलाए क्यों आपने फिर? मतलब चलाए क्यों नहीं दे रहे थे बिल आपको? वो तो सर चलाने के बाद ही एंड में हम बिल पेश करते हैं और उसका हमको फिर रिइंबर्स होता है। देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, योर लॉर्डशिप, और हमारी गाड़ियां उसके बाद भी चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। स्टेट को क्या कहना है? रिप्लाई का पेज 5 काइंडली सी माय लॉर्ड। Paragraph में my lord clearly stated कि in view of the above submission it is thus clear that all the admissible dues for which the petitioner is entitled has been duly paid, my lord. Paid rupees 1,27,562 rupees. In my rejoinder I have not denied it, your lordship. They have paid me this amount. उसके अलावा ये अमाउंट जो मैं इस पिटीशन में क्लेम कर रहा हूँ दैट इज स्टिल पेंडिंग। For which period? वो नहीं है क्लियर। ये सर इनके ये जो रिजॉइंडर ये रिप्लाई जो ये फाइल किए हैं उसके बाद की डेट की कम्युनिकेशन है 20/2/2024 की। ये तो किस पीरियड के लिए भाई? ये मेरे प्रेयर में है सर, ये 2020 के दिसंबर जो रिलीफ क्लॉज में मैंने जो टाइम लिखा है सर उसी पीरियड का ये पेंडिंग है और सूचना के अधिकार में भी ये बता रहे कि हमारे इस पीरियड का पेंडिंग है। ये सूचना के अधिकार में जो इन्होंने जवाब दिया है सर संबंधित शाखा से प्राप्त जानकारी, ये 12/7/24 को सूचना के अधिकार के तहत ये तो बोल रहा है कि 3/5/2000 से मिल गया आपको। ये सर 13 मार्च 21 तक 22 तक disputed can how do you say that it is an admitted position? They are denying it. मार्च 22 तक ये पीरियड का है सर। ये जो रिप्लाई पेश की है उसके बाद की डेट की है 12/7/24 का, जो पेज नंबर 7 में मेरे रिजॉइंडर में उसको देखेंगे सर। तो हम क्या ऑर्डर करेंगे भाई? हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, गवाही लगेगी इसकी, सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा आपको इसके लिए।
एडमिटेड होता तो दे देते, अब डिनाई कर रहे हैं वो तो। जो सूचना के अधिकार में सर जानकारी मिली है, और ये जो वहीं जाके बताइए कि साहब नहीं देंगे तो फिर आप सिविल सूट फाइल करिएगा। जो अमाउंट ही बोल रही सर, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, वो मिला है हम बोल रहे हाँ तो ठीक है ना, देन इन दैट केस पीरियड देखिए ना 13/5/2020 से मार्च 21 हैं। तक। लेकिन सर दे हैव नॉट स्पेसिफाइड अंडर विच हेड दे हैव प्रोवाइडेड दिस अमाउंट। ये इनको प्रॉपर स्पेसिफाई करना था कि इन्होंने किस किस हेड का अमाउंट हमको प्रोवाइड किया है, और हम अपने रिजॉइंडर में इसको डिनाई भी नहीं कर रहे कि हमको ये अमाउंट मिला है। हम जो अपनी रिलीफ मांग रहे हैं सर, कौन हेड का पैसा इनको नहीं मिला, he is also not specifying because that period has already been covered in the reply of this. दिसंबर 20 से लेके मार्च अप्रैल 21 बोल रहे हो, ये वाले में तो जवाब में आ रहा है। 5 से मार्च 22 उसमें तक। सब वो जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का वो जो हमको दिए हैं, देखिए ये राष्ट्रीय बालक सुरक्षा कार्यक्रम एनएचएम की स्कीम के तहत जो चल रहा था गाड़ी, Following उसका leave has been claimed. London Council for the petitioner submits that the petitioner is a trapped running है। क्या कर रहे हैं आप? My vehicles were on rent for the respondent department, your lordship. In the CMHO office under National Health Mission's RBS scheme. The proprietor of 5 tool and travels Have rented his vehicle to the respondents or during the period of COVID, during the period of pandemic system. He submitted that the amount of rupees what is the amount? आपने तो amount भी नहीं लिखा। कुछ नहीं है इसमें। ये सर इनके अपना ड्यू है अभी तो नहीं बता रहा है ना। 26 सर जो ये रिप्लाई दिया है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने। आप अपने पिटीशन में लिखेंगे कि नहीं कितना चाहिए आपको? For the bills, rent amount for the period from December 2020 to March-April 2020 has not been paid to the petitioner first up. Therefore, he prays that the said relief claim may be granted first. Reply has been, he further submits that, उसके पहले लिखना है, he further submits that initially the writ petition was filed by the petitioner, which was disposed of by this court, directing the respondent number 2 to consider 2 है ना? NHM कौन है? नेशनल हेल्थ मिशन 2 to 4 मैडम 2 to 4 to consider the grievance. The grievance was rejected by the impugned order in Section P1 post. Without any reason or rhyme, comma. So reply has been filed by the respondents in which they have stated that an amount of rupees 127,00562 has been paid to the petitioner from the period from 13/5/2020 to March 2022 first up. Therefore, as such, no amount is lying with the state to be paid to the petitioner first up. Learned Council for the 2 to 4 submits that the petitioner is not entitled for any amount of the petitioner answering respondent, as no amount is lying, no amount is to be paid the petitioner first up. Rejoinder has been filed by the respondents in which a letter dated 22/2024 is appended herewith, appended therein, written by Chief Medical and Health Officer, District Korea, Bakulpur CG, to the Directorate of Health Services, Nava Raipur CG Custom. It also, this letter indicates that an amount of rupees 26,31128 could not be paid to the petitioner on account of non-allotment of the said amount. First up, so the state's reply indicates that the amount has been paid, whereas the document of Nature P12 filed with the Nature P12 filed with the rejoinder indicates that some amount is still lying vacant and could not be paid on account of non-grant of allotment. First up, be that as it may, it appears to be a factual dispute. However, this court is at this stage inclined to dispose of this petition, directing the respondent number 2 and 3. Respondent number आपने तो डायरेक्टर तो बनाया नहीं है 6 respondent number 6 and director of health services
our rapport to look into the grievance of the petitioner in light of the letter dated so and so register देना, and if it is found that the petitioner is entitled to receive certain amount for which the claim is made, pass appropriate order in that regard. क्या करेंगे सर? कुछ नहीं कर सकते. 22 the Amantam Boli, the Pawan Srivat. This exercise be done within a period of 90 days from the date of submission of copy of this one.